Welcome to Defense Chronicle India's top defense and strategic news update for May 14th, 2025. Here are today's biggest headlines from India's security landscape. The Indian Air Force's Akash surface-to-air missile scored a direct hit during live combat in Operation Sindoor, reaffirming India's indigenous air defense strength. A BSF Jawan, detained since April 23rd by Pakistan Rangers, was returned safely to India at the Attari-Wagah border. India briefed defense attachés from 70 countries on Operation Sindoor, outlining its decisive counter-terror response. Notably, China and Turkey were not invited. In a major setback for Pakistan, the Indian Air Force shot down 5 Pakistani fighter jets during high-stakes aerial combat in Operation Sindoor. India's Su-30 MKI fighters showcased superior evasion by dodging 8 PL-15E and HQ-9BE missiles in live engagements. India has requested additional S-400 air defense systems from Russia to bolster national defense. Russia is expected to agree. The Hellenic Air Force of Greece is exploring the purchase of India's Rudram 1 and Rudram 2 missiles to equip its Rafale fleet. Former DRDO Chief Dr. Mishra debunked Pakistani misinformation, asserting BrahMos missiles' unparalleled precision and reliability. The Indian Ministry of Defense has fast-tracked the procurement of indigenous anti-drone systems to counter rising aerial threats. Poor performance of Chinese PL-15E missiles and J-10C fighters triggered a sharp drop in Chinese defense stocks. Indian defense stocks, including Bharat Dynamics and Cochin Shipyard, surged up to 11% following Operation Sindoor's success. India has blocked X, formerly Twitter, accounts of China's Global Times and Turkey's TRT World for spreading misinformation and propaganda. New Chief Justice, Justice Bhushan Ramakrishna Gavai, has been sworn in as the 52nd Chief Justice of India. The ceremony was attended by Prime Minister Narendra Modi, who extended his best wishes for Justice Gavai's tenure. मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। That wraps up today's top defense and strategic updates. Subscribe to Defense Chronicle India for real-time news, insights, and analysis. Stay informed, stay secure.